1944 की जीप में बैठने का मौका मिल रहा है। ये है जीप के ओनर मिस्टर शेखर। चाय बनाएगा, चाय पिएगा क्या? मैं ले लूँगा अपने आप। अभी मैं ज़्यादा चाय नहीं पीता हूँ एक्चुअली। अच्छा ठीक। तो ये जनाब है शेखर, जिनके खूबसूरत से घर में अगले कुछ दिन मैं रुक रहा हूँ। शेखर मुझे किचन से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। यहाँ किचन आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, अपने लिए खाना वाना बना सकते हैं। Coffee here. ओके। Coffee here. And tea. And you have your sugar and milk. राइट। Cups and plates are there. ग्रेट। Okay, cups are there. So you just boil the water. And that's it. आई विल मेक। Only thing I request is that don't let any water fall down. Well, if it falls, just rub it I up. will clean that. Wipe that. या And just hold it. And that's it. दिस इज माय होम। शानदार घर। शेखर ने इसे बहुत ही सुंदरता से मेंटेन किया है। उस जीप की तरह ये घर भी काफी पुराना है। 1947 में वर्ल्ड वॉर 2 के समय जापान बॉम्बार्डिंग में इस घर का काफी हिस्सा डैमेज हो गया था। शेखर ने इसे समय के साथ रिमॉडलिंग करते हुए आज ये होमस्टे के रूप में इसे चला रहे हैं। और यहाँ रूम जो शेखर ने मुझे अलॉट किया, दिन भर इम्फाल घूमने के बाद अगर आप में जरा भी थकावट महसूस होगी तो यह रूम आपकी सारी थकावट पक्का से उतार देगा। So this is the Jeep, built in US 1943, and it's a Ford Willys Jeep, okay? And it came to Imphal, I presume 1944 or something like that. ओके। And then I purchased this about 15 years ago, sorry, 10 years ago. 10 years ago, okay. And then at that time it was not complete, it was in different bits. All right. And then I had to purchase the chassis, the engine, parts of the frame, and the remaining parts I bought it from US and UK, parts of it. So you bring all these different parts together. It took about 4 years to Assemble everything. assemble everything. That's great. Some parts you can't get it in India, Uh-huh. so you have to purchase it from US or UK and bring it here. So that's why it took 4 years to put it together. And now it is in running condition? Oh, it is in running condition. It was just serviced yesterday. All right. I was driving around in Faltown with this. Great, And great. it just grows. And just to show you that it just starts like this, okay? So I'll start the engine now for you. Yes, clear. You can come. सुबह के 5 बज गए और हम शेखर के साथ निकल रहे हैं हिल वॉकिंग के लिए। पीछे मेरे साथ मेरे बगल में ही रूम में रहते आदित्य केरला से हैं और यहाँ 2-3 महीने के लिए हैं। lot of kids, yeah. Most of the time, none of the adults are plan to become parent. हम शेखर के 1944 के जीप में हिल क्लाइंबिंग के लिए आए हैं।
यहाँ के पास में बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए, रनिंग के लिए। 4, 4:30, 5 बजे यहाँ काफ़ी दिन हो जाता है, यहाँ लेट तक नहीं रहते हैं। अभी तो 10 मिनट की वॉकिंग की है और उसमें हवा निकल गई पर बहुत ही रेजुवेनेटिंग एक्सपीरियंस है, मज़ा आ रहा है। देखते हैं what this place is called. Cheirao Ching. Cheirao Ching. Cheirao Ching is means hill. Cheirao is what you call Cheirao Ching, which is linked to New Year's Day Okay. in this area. Okay. So it is traditionally everybody, children, adults will climb every New Year's. Okay. So the New Year's Day is in sometime between March and April. So ours happened to be last Saturday. Yes. That's the New Year's Day. So the New Year's Day works from the basis of the lunar calendar. Okay. So that's why it's not in January. It's rather in March. Yeah. It's not English New Year. Yeah. Yeah. So this is the annual event. Okay. And that goes on quite regularly. And here I think there is a school. Huh? There's a school there. There's a tutorial place. All right. ये जो आप चिल्लाने की आवाज़ सुन रहे थे, यहाँ एक आदमी हर रोज़ सुबह इम्फाल को जगाने का काम करता है, अलार्म की तरह वो यहाँ आकर चिल्लाता है हर रोज़ सुबह। यह सबसे अच्छी जगह होगी अगर आप इम्फाल को स्थानीय लोगों की नज़रों से देखना चाहते हैं तो। बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, दीवार है कि पहाड़ पता नहीं। और ये है प्यारा सा शहर इम्फाल। नीचे उतरते समय बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि पैर यहाँ अपने आप ही भागते हैं। किसी भी शहर में हम टूरिस्ट तो होते ही हैं, पर अगर उस शहर को लोकल्स की तरह स्थानीय लोगों की नज़रों से देखा जाए तो बात ही कुछ और है।